I am Devrat Singh, and in today's lecture we are going to study the introduction of programming. Before moving ahead, let's get familiar about some basic terminology of program. So, this course is all about software development, program using Java programming language. So, the first terminology of the programming is data. आप सब लोग हर दिन कहीं ना कहीं डेटा टर्म को जरूर सुनते होंगे। तो आज चलिए जानते हैं कि ये डेटा होता क्या है। डेटा एक रॉ फैक्ट है या कोई फिगर है जिसका कि कुछ मीनिंग होता है, बट इसका एक कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। सो बेसिकली इन कंप्यूटर साइंस यू कैन से दैट डेटा रेफर्स टू any fact and figure, any facts or figures having some meaning, but not complete meaning. For example, if you say 95, this 95 is a fact. It is a number. It is a natural number. It is an odd number. But it doesn't give you a complete meaning. इस 95 को देख के आपको इसके होने का कंप्लीट मतलब नहीं समझ आएगा। बट इसके साथ जब हम लोग परसेंटेज लगाते हैं तब ये समझ आ रहा है कि ये किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स हो सकता है, किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हो सकता है, एनीथिंग कैन बी हैपन, बट स्टिल इट डजंट गिव यू द कंप्लीट मीनिंग। सो दिस फैक्ट इज कॉल्ड अ डेटा। नेक्स्ट, राघव. This is our name. This is also a data. Anything like 7. This is also a data. Any fact or figure which has some meaning is known as data in computer science. So now proceed with the second term, which is information. अब ये इंफॉर्मेशन क्या होता है? जब हम लोग डेटा को प्रोसेस कर देते हैं तब ये कन्वर्ट हो जाता है इंफॉर्मेशन में। सो वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एज द प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अभी जो हमने एग्जांपल देखे 95, राघव एंड 7, इस तीनों अनप्रोसेस्ड फैक्ट को हम लोग एक इंफॉर्मेशन में चलिए कन्वर्ट करके देखते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। राघव is in class 7 and he scored 95% in his
एनुअल एग्जामिनेशन। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो 95%, ये जो राघव है और ये 7 है, तीनों का जो कंप्लीट मतलब नहीं निकल रहा था वो इस हमारे इन एग्जाम्पल में कंप्लीट मीनिंग के साथ आ गया। राघव जो कि एक बॉय है, उसने क्लास 7 में 95% स्कोर किया अपने एनुअल एग्जामिनेशन में। So when data is cooked, when data is processed, then it converted into information. जब डेटा को हम लोग प्रोसेस कर देते हैं तब वो इंफॉर्मेशन में बदल जाता है। चलिए थर्ड टर्मिनोलॉजी को देखते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, प्लीज नोट डाउन दिस। The third term is program. What is program? आज से पहले आप लोगों ने कभी प्रोग्राम के बारे में सुना है? आप लोग घर में कोई पार्टी फंक्शन वगैरह करते हैं तो उसी को प्रोग्राम का नाम देते हैं। सो बेसिकली प्रोग्राम होता क्या है? प्रोग्राम जो आप लोग अपने घर में कर रहे होते हैं उसमें बहुत सारे काम होते हैं और उस बहुत सारे काम को हम लोग ग्रुप में बांटते हैं, लाइक खाना बनाना, लाइक गेस्ट को अरेंज करना, लाइक रिसोर्सेस मैनेज करना, चेयर टेबल्स की व्यवस्था करना, ये सारे ब्लॉक ऑफ वर्क है। तो उसी तरीके से प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसे हम ब्लॉक ऑफ कोड भी कहते हैं और जिसे कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करवा के कोई भी काम कराया जाता है। So basically I want to say a program is a program is a set of instructions, इसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड कहते हैं। ब्लॉक ऑफ कोड which is required for the execution of a task in a computer system. So a program is a set of instruction and set of instructions is called block of code, जिसका कि इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। सो आई होप आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में किसी भी काम को करने के लिए किया जाता है। Our next terminology is programming language. Programming language. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी दो इंसान को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत होती है एंड दैट लैंग्वेज इज अ मीडियम। भाषा जो होती है वो एक माध्यम होती है किसी दो इंसान को एक दूसरे से बात करने के लिए। इन द सेम वे इन अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर ऑल्सो हैज इट्स ओन लैंग्वेज। कंप्यूटर का भी अपना लैंग्वेज है जिसमें वो यूजर के साथ बात करता है और यूजर के बातों को समझता है। सो अ लैंग्वेज which
computer understand, a language which computer understand is known as programming language. Basically, computer understand binary language including zero and one only. So कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उस भाषा को हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज को समझता है जिसके अंदर सिर्फ 2 डिजिट आते हैं, 0 और 1। कंप्यूटर इन्हीं 2 डिजिट 0 और 1 की हेल्प से सारे टास्क को परफॉर्म करता है। सो दिस binary language is known as the language of computer. So this is now we are studying programming language. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? तो वो लैंग्वेज जिसमें हम कंप्यूटर से बात करते हैं और कंप्यूटर से कोई काम कराते हैं उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। सो हियर जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज से हम लोग इस पूरे लेक्चर सीरीज में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने वाले हैं। तो जावा यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे और उस इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे कंप्यूटर हमारा टास्क परफॉर्म करेगा। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम अपने सॉफ्टवेयर को जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू डेवलप करेंगे और फिर उस सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने डिजायर्ड टास्क को पूरा करेंगे। होप इट इज अंडरस्टूड। सो आवर लास्ट बट नॉट द लीस्ट टर्म ऑफ दिस programming terminology is programmer. Who is programmer? A person who writes the block of code in Java is known as programmer. So a person who writes the block of code in a programming language is known as programmer. So प्रोग्रामर बेसिकली वो इंसान होता है जो कंप्यूटर में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिखता है। तो उस इंसान को हम लोग कहते हैं प्रोग्रामर। सो बेसिकली आम बोलचाल में जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं या जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं उन्हें हम प्रोग्रामर कहते हैं। Hope you understand this 5 terminology of the programming language. Let me remind you all. The first one is data. Data क्या होता है? कोई भी raw fact या figure जिसका कुछ मीनिंग होता है और जिसका इस्तेमाल हम लोग एक प्रोसेस डेटा को मतलब इंफॉर्मेशन को तैयार करने में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टर्म इज इंफॉर्मेशन। व्हाट इज इंफॉर्मेशन?
ए प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जैसे कि हमने कंप्यूटर में प्रेस किया कीबोर्ड के थ्रू 3, फिर हमने प्रेस किया 5, और फिर हमने प्रेस किया 7, फिर हमने प्रेस किया 8, और अगर हम चाहें इन सारे टर्म्स को ऐड करना तो हमें इसके लिए प्लस ऑपरेशन को करना होगा। प्लस ऑपरेशन करने के लिए कंप्यूटर इन चारों नंबर 3, 5, 7 और 8 को अपने लिस्ट में, जिसे कि हम लोग क्यू कहते हैं, उस क्यू लिस्ट में रखते हैं और फिर प्लस सिंबल के को यूज करके इन सारे टर्म्स को, इन सारे नंबर्स को सम कर देते हैं। सो सम करने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास आता है, दैट रिजल्ट इज आवर इंफॉर्मेशन। आवर थर्ड टर्म इज प्रोग्रामिंग और प्रोग्राम। सो बेसिकली प्रोग्राम एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसे कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, जिसे हम सभी कंप्यूटर में डालते हैं कंप्यूटर से कोई भी वर्क परफॉर्म करने के लिए। आवर नेक्स्ट टर्म इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो लैंग्वेज जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं उसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। एंड आवर लास्ट टर्म इज प्रोग्रामर। वो इंसान जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डेवलप करता हो, जो कोड लिखता हो, जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखता हो, उसे हम लोग प्रोग्रामर कहते हैं। होप ऑल द 5 टर्म्स इज क्लियर नाउ। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे अपने उस एक्चुअल लेक्चर में जहां हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टुवर्ड प्रोग्रामिंग। In modern software development, we use object oriented programming technique. In modern day software development, we use object oriented programming. अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कोई भी सामान। तो इन जनरल हम लोग जानते हैं कि हर एक सामान के पास दो चीजें होती है, उसका अपना स्टेट और बिहेवियर। स्टेट मीन्स जैसे कि इस पेन को ले लें तो इस पेन के पास जो स्टेट है वो है इसका कैप, इसका निब, इसमें जो इंक है और इसकी जो बॉडी है, ये इसके स्टेट है। इस पेन की बिहेवियर को की अगर बात करें तो ये पेन हमें मल्टीपल वेज में हेल्प करते हैं। लाइक फर्स्ट इज हम इस पेन से लिख सकते हैं, सेकेंड इज इस पेन के थ्रू हम लोग पेन फाइट कर सकते हैं, थर्ड इज इस पेन को हम लोग मोबाइल को रखने के लिए फोन होल्डर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ऑल द वर्क दैट इज परफॉर्म्ड बाय दिस पेन इज कॉल्ड इट्स बिहेवियर। सो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो स्मॉलेस्ट टर्म यूज होता है, तब एनी स्मॉल टर्म विच इज यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज टोकन। सो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब हम सीखेंगे तो उसमें जितने भी वर्ड लिखे होंगे किसी भी कोड में, किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड में, उन सारे वर्ड्स में से कोई भी स्मॉलेस्ट, इससे स्मॉलेस्ट लेटर या सिंबल को अगर हम लोग उठाएं तो उसे हम लोग कहते हैं टोकन। So the smallest unit of a
program is called token. Anything of the programming language is considered as token. Basically, token is of 5 types. The first one is keyword. Second is identifier. Third is literal or constant. Fourth is operator. And the fifth one is separators. Or punctuator. Punctuators. So these 5 are the tokens of a programming language. तो इन सारे tokens को हम लोग 1 by 1 करके सीखेंगे. So let's start with the keyword. So let's start with keyword. Keywords are the reserved words of any programming language. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सॉफ्टवेयर डेवलपर जिन्होंने उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तैयार किया है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तैयार होते टाइम जो वर्ड्स डिफाइन किए गए थे उन्हें हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं. दे आर द रिजर्व्ड वर्ड्स. दे आर द रिजर्व्ड वर्ड्स और इट इज प्रीडिफाइंड वर्ड. प्रीडिफाइंड during the compilation of a programming language by the developer of that language. तो हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल of keyword are, the first is int,
second is float, third you can write print, ln, etc. इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स, वो सारे वर्ड्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करते टाइम बताए गए थे, डिफाइन किए गए थे, उसे हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं. So keywords is basically reserved words of any programming language. It is predefined during the compilation of a programming language by the developer of that language. So this is keyword. Our second term is, note down it. Keywords. Please note down the definition of keyword with example. Now we can understand the second token of a programming language is identifier. The second one is identifier. So basically, what is identifier? Any user defined word is considered as identifier. And identifier is the name of a variable, class, and any method which is assigned by the user while writing the Java program is called an identifier. सो आइडेंटिफायर जो होते हैं वो किसी भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, किसी भी क्लास का नाम हो सकता है, या फिर किसी भी मेथड का नाम हो सकता है एक जावा प्रोग्राम में. आइडेंटिफायर का जो नेमिंग होता है वो यूजर पे डिपेंड करता है या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर पे डिपेंड करता है. सो वो सारे नाम प्री डिफाइंड ना होके यूजर डिफाइंड कहलाते हैं. आइडेंटिफायर के नेमिंग का कुछ रूल है और कुछ कन्वेंशन है. सो हम लोग का जो मेन फोकस होगा वो होगा कि रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर क्या होते हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टडी द रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर. द फर्स्ट इज an identifier must start with an
alphabet and can be followed by digit or underscore. Second, an identifier cannot contain any special symbol except an underscore. So, rules of identifier is an identifier must start with an alphabetical letter and can be followed or forwarded by any digit or underscore. An identifier cannot contain any special symbol except an underscore. जो आइडेंटिफायर है उसमें कोई किसी भी तरीके का कोई भी हम लोग स्पेशल सिंबल को यूज नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट अंडरस्कोर के. सो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो प्लीज नोट डाउन दिस. Now we can see the example of an identifier. Example of an identifier. So we can write like int roll, float, marks, string name. Here roll, marks and name are identifiers. जैसे कि हम लोग कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं जिसमें हम किसी स्कूल के एडमिशन प्रोसेस के लिए कोड लिख रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें कुछ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी. जैसे कि स्टूडेंट का रोल को स्टोर करने के लिए हमने एक इंटीजर टाइप का रोल वेरिएबल बनाया है. किसी स्टूडेंट के मार्क्स को इंटर करने के लिए हमने मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाया है. किसी भी स्टूडेंट के नेम को स्टोर करने के लिए हमने नेम नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है. सो these are the identifiers and we have the flexibility. We can write rl
in place of roll. We can write MR in place of marks. We can write NM in place of name. We can write anything as an identifier as the name of the variable. हम लोग वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट एक कन्वेंशन, मैंने भी बताया था कि रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर के बाद कुछ कन्वेंशन भी होते हैं कि जो हमारा आइडेंटिफायर हो वो कैसा हो. एंड आइडेंटिफायर मस्ट बी एज शॉर्ट एंड मीनिंगफुल. जो आइडेंटिफायर होना चाहिए वो शॉर्ट भी होना चाहिए एंड मीनिंगफुल भी होना चाहिए. मीन्स उस आइडेंटिफायर से एग्जैक्ट मतलब निकल रहा होना चाहिए. लाइक अगर हमने आइडेंटिफायर इंट आर बना दिया, उससे एग्जैक्ट मीनिंग हमें ये नहीं समझ आएगा कि इस आर नाम के वेरिएबल में हम लोग क्या स्टोर करेंगे. तो इसलिए जो नेम ऑफ आइडेंटिफायर होगा वो मस्ट बी मीनिंगफुल होगा. Hope the second token is clear now. Hope you all understand the term identifier. Now we can proceed to the next token, which is an any literal or a constant. So please note down it. Our next term is literal or constant. Any symbol which has a fixed meaning is considered as a literal. कोई भी सिंबल जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होगा, चाहे वो वेरिएबल का नाम हो, वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू हो, वो सारे जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, जिस सिंबल की वैल्यू फिक्स्ड हो, उसे हम लोग लिटरल या फिर कांस्टेंट कहेंगे. अब लिटरल्स और कांस्टेंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो एक एक करके हम लोग लिटरल्स के टाइप्स देखेंगे. The first is integer literal. Integer literal. So any value like 5, like -6, like 87, 1 lakh, etc. Any such kind of values are called integer literals because this symbol has a fixed meaning, that is 5. This symbol has fixed meaning, that is -6. So any such symbol having the fixed meaning is called literal, and these all are the integer literals. Now the next type of literal is decimal literal.
they are 5.7, 6.872, minus 9.302, etc. So any such kind of decimal values are considered as decimal literal. इस तरीके की कोई भी डेसिमल वैल्यू वाले जो टर्म होंगे, जो सिंबल होंगे, उसे हम डेसिमल लिटरल कहते हैं. Our next one is character literal. Such as A, B, Q, R, etc. All these symbols are considered as character literals because all these symbols have a fixed meaning, fixed value. इन सारे टाइप के कैरेक्टर को हम लोग कैरेक्टर लिटरल्स कहेंगे. ऑल अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड एज कैरेक्टर लिटरल्स. जितने भी अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें हम कैरेक्टर लिटरल्स कहते हैं. आवर नेक्स्ट लिटरल इज स्ट्रिंग लिटरल्स. Any such name is called string literals. किसी भी तरीके के जो नाम होते हैं उन्हें हम लोग स्ट्रिंग लिटरल्स कहते हैं. स्ट्रिंग लिटरल्स को हमेशा डबल कोट्स में लिखा जाता है और कैरेक्टर लिटरल्स को हमेशा सिंगल कोट में लिखा जाता है. तो बेसिकली a literal is a symbol which has a fixed meaning is considered as literals. वो सारे सिंबल्स जिनके मीनिंग फिक्स होते हैं उन्हें हम लोग लिटरल्स या कांस्टेंट कहते हैं. लिटरल्स के बहुत सारे फॉर्म हैं, जैसे कि इंटीजर लिटरल्स जिसमें हमारे इंटीजर्स आते हैं, डेसिमल लिटरल्स जिसमें हमारे डेसिमल वैल्यूज आते हैं, कैरेक्टर लिटरल्स जिसमें हमारे सारे अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स, स्मॉल लेटर कैरेक्टर एंड अपर लेटर कैरेक्टर आते हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स जिसमें कि किसी भी टाइप के नेम या सेंटेंस, लाइक इस तरीके का सेंटेंस भी वी आर लर्निंग प्रोग्रामिंग language. So these kind of sentence is also considered as string literals. Hope आप लोगों को ये सारे types of literals समझ आ गए होंगे. अब हम लोग प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट टोकन को, जो कि है ऑपरेटर. सो प्लीज नोट डाउन दिस.
The next token is operator. Write down the definition of operator. An operator is a symbol which is used to perform arithmetical and logical operations with the operands is called with the operands is considered as an operator. So एक ऑपरेटर एक सिंबल होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, जो कि ऑपरेंड्स के साथ एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसे हम लोग ऑपरेटर करते हैं। ऑपरेटर का इस्तेमाल एरिथमेटिकल मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इस टाइप के रिजल्ट को अचीव करने के लिए करेंगे, एंड लॉजिकल ऑपरेशन लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, सो दीज काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम लोग ऑपरेटर को यूज करते हैं। ऑपरेटर का इस्तेमाल हमेशा ऑपरेंड के साथ होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड, ऑपरेटर इज ऑफ 3 टाइप। सो लेट्स डिस्कस इट। On the basis of operands, operator is of 3 types. First one is named as unary operator. Second is binary operator. And the third one is ternary operator. Ternary operators. सेपरेटली ऑपरेटर्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड ऑपरेटर के 3 टाइप होते हैं, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। लेट डिस्कस दीज 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर राइट नाउ एंड द डिफरेंट एक्चुअल types of operator we will discuss in the later classes. So our first one is unary operator. First note down the definition of operator and the classification of operator on the basis of operands. Note down this. So the first one is unary operator. So what is unary operators? All those
all those operators which required only one operand, which required only one operand. सो वो सारे ऑपरेटर जो सिर्फ एक ऑपरेंड की यूज करेंगे उसे हम लोग यूनरी ऑपरेटर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस plus plus and minus minus and not. All these five are called unary operator. Let's take an example of all these each one by one, like plus 5 minus 6 a plus plus y minus minus not p. So these kinds of operation can be performed by using unary operator. And our next operator is binary operator. Binary operators. All those operators which required two operands is called binary operators. Example: plus minus, multiplication symbol, division symbol, modulus symbol, greater than, less than, greater than and equal to, less than and equal to, etc. So these kinds of operator is considered as binary operator. Why binary operator? क्योंकि इन सारे ऑपरेटर्स को दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी. Let's take the example to make it clear. 5 plus 3. It required two operand, 5 and 3. 7 minus 2. It required two operand. 8 multiplied by 4. 9 divided by 3. 10 modulus 3. 5 is greater than 2. 7 is less than 9. A is greater than or equal to 10. B is less than or equal to 7. So all such kinds of the expression required binary operators. Now we can proceed to the third operator, which is ternary operator. Please note down the both unary and binary operators.
Now the next one is ternary operator. All those operator which required three operand to execute is called ternary operator. Example: question mark and colon. The name of this operator is conditional operator. And the example is if x is greater than 10, x is greater than 9, then if it is true, then this part is executed to more than one digit number. If the value of x is less than 9, so else part will be executed after this colon, one digit number. So this is an example of ternary operator which required three operand. So this is the first operand, this is the second operand, and this is the third operand. One first operand, this is the second operand, and this is the third operand. This is condition, this is true part, and this is false part. So this is our ternary operator. Now the operators segment is completed for now. Now we can proceed to the last token, which is separators. Please note down this. Separators. An operator
which is used as separators in the program code is known as separators. For example, semicolon, next one is curly braces, small bracket. These all are the separators. These all are considered as separators. This semicolon represent end of the line. This is end of the block. So these all are the 5 types of token that we are discussed right now. I hope कि आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स, ये सारे कंसेप्ट समझ आ गए होंगे. हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.